Hello friends, in today's lecture we will be understanding the third problem for analytical reasoning. We have already seen the two problems and now it is a time for the third problem. So let us begin with the MCQ. So students, in the third problem we have been given 6 flats on a floor in 2 rows facing north and south are allotted to P, Q, R, S, T and U. Q gets a north facing flat and is not next to S. The third condition says S and U are diagonally opposite flats. And the fourth condition says that R next to U gets a south facing flat and T gets a north facing flat. So now the first thing what we do is we draw the diagram. So let us begin with the diagram. Now as it is, they have told us that 6 flats on a floor in 2 rows facing north and south are allotted to P, Q, R, S, T and U. So students, हमारे पास 6 लोग हैं जिन्हें नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग फ्लैट्स अलॉट करने हैं और हमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं. तो एक कंडीशन ये कहता है कि Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S. उसके बाद ये कहते हैं कि S एंड U आर डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स. तो चलिए डायग्राम बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो कंडीशन बी दिया गया है पहले मैं वो देखता हूँ. उसमें कहा गया है कि Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S. सो आई विल ड्रॉ Q समवेयर हियर. Then they are saying is not next to S. So there is a gap of one flat and then I am having S. So I will write down S here and these are north facing flats. So I will mark them with N. Now the next condition says that S and U are diagonally opposite flats. So let me draw the next step. And they have also told us one thing in condition D that R is next to U gets a south facing flat and T gets a north facing flat. So I know that Q, S and T will be facing towards the north. So if you see the last condition, they have told us that T gets a north facing flat. So I know that Q and S इन दोनों के बीच में रहेगा T. So I will write down T in between Q and S. Now I am left with 3 more people. I am done with Q, I am done with T and I am done with S. So now I am left with 3 people. So now let me go for the condition C. It says that S and U are diagonally opposite flats. So I will mark 3 people here or 3 flats right now. S and U are diagonally opposite flats. So since U is diagonally opposite to S, I will write down U in this position. Now I am left with 2 people. One is P and another is R. Now students, if you see the last condition में क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि R next to U gets a south facing flat and T gets a north facing flat. तो मुझे ये पता है कि R के जस्ट बाजू में या जस्ट नेक्स्ट टू U I am having R. So I will write down R and I am just left with one flat which is P. So I will write down P. And these are south facing flats. So students, we have got all the 6 flats. 3 are north facing and 3 are south facing. And we have got the flats as Q, T, S and U, R, P. So let us solve the first MCQ or the first question which has been asked related to this condition. So the first question says that the flats of which of the other pairs than SU are diagonally opposite to each other. So first thing, let me draw the diagram. And it was Q, T, S and U, R and P, where QTS was facing north and URP was facing the south. So now they are asking the flats of which of other pairs than S and U are diagonally opposite to each other. So if we look at S and U, these were opposite and they were diagonal.
So other than S and U, which of them are diagonally and opposite flats? So we have been given the first option is QP, then we are having PT, next we are having QR, and then we are having TS. So students, if we see QP, now Q is on the extreme end whereas P also is on the extreme end. Now they had given us S and U. If you look at S and U, अगर हम S और U को देखें तो S ये जो फ्लैट था वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे था एंड U ये भी जो फ्लैट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है. तो मुझे दो फ्लैट्स को कंसिडर करना होगा जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे है. तो मैं अगर फर्स्ट फ्लैट या फर्स्ट पेयर देखूँ वो है QP. Q एंड P दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे है, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट Q एंड P आर द answers to this question. So I will mark option A as the right answer. अगर हम P और T को देखें स्टूडेंट्स, P जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है पर T is not on the extreme position, वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे है. T जो फ्लैट है वो Q एंड S के ठीक बीचों बीच है, इसलिए मैं P T को तो मैं डेफिनेटली नहीं लूँगा. उसके बाद आता है Q एंड R. अब Q एंड R में Q ये जो फ्लैट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है बट R बीच वाले पोजीशन पे है, तो मैं अगेन QR को डिस्कार्ड कर दूंगा. और T एंड S, T और S ऑपोजिट्स तो है ही नहीं, वो जस्ट ठीक एक के बाजू में एक में ही है, तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन A इज द राइट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट MCQ. उसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गेट साउथ फेसिंग फ्लैट्स. सो फर्स्ट थिंग एज यूजुअल आई ड्रॉ द डायग्राम और द पोजिशन ऑफ द फ्लैट. अब मुझे ये पता है कि QTS जो है वो नॉर्थवर्ड फेसिंग थे और URP दे वर साउथ फेसिंग. सो नाउ दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गेट साउथ फेसिंग फ्लैट्स. अब साउथ फेसिंग फ्लैट्स में मेरे पास तीन फ्लैट्स है, वो है U, R एंड P. तो अगर मैं ऑप्शन B देखूँ विच इज URP, दैट विल डेफिनेटली बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर विच इज URP. Thank you for watching this video. Stay tuned to Informatica and do subscribe our channel.